गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपने एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम जो है वो नियरली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बढ़ा दिया है सेंट्रल अरेबियन सी में। इंडिया ने अपने पुराने क्लेम्स को भी मॉडिफाई किया है ताकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है पाकिस्तान से, उसे अवॉइड किया जा सके। तो जो रिवाइज सबमिशंस हैं अप्रैल 2025 में CLCS को सबमिट की गई हैं। तो अगर हम देखें तो EEZ या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक्सक्लूसिव जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो आपका क्लेम होता है, उसमें क्या फ़र्क है। तो कोस्टल कंट्रीज़ जो हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है माइनिंग, फिशिंग और रिसोर्सेज का अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम देयर बेस लाइन। और कंट्रीज़ अगर वो साइंटिफिकली प्रूव कर दें कि वो उनकी नेचुरल एक्सटेंशन है सी बेड एरियाज़ उनके लैंड मास के, तो वो जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भी क्लेम कर सकती हैं। अब इसके अंदर वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ऑयल रिजर्व्स और बाकी के वैल्यूएबल मिनरल्स को भी एक्सप्लोर कर सकती हैं, कमर्शियल माइनिंग कर सकती हैं। तो ये जो करंट ओशियानिक क्लेम्स अगर हम इंडिया के देखें, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा टेरिटोरियल सी है, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब जो न्यू एक्सटेंशन क्लेम की गई है वो 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ECS की ऐड की जा रही है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर EEZ में। ठीक है, तो इससे जो है लगभग इंडिया का जितना भी हमारा लैंड एरिया है उतना ही हमारा कंबाइंड सी बेड और सब सी बेड एरिया हो जाएगा अगर इसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो इंडिया ने इससे पहले भी 2009 में जो है ये सबमिशन किया था, लेकिन उसे जो है उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2021 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया इंडिया के क्लेम को, कहा कि 100 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो जो है वो डिस्प्यूटेड है, सर क्रीक रीजन में आता है, तो इंडिया उस पर क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए CLCS ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया का फुल क्लेम अरेबियन सी में मार्च 2023 में। अब अप्रैल 3, 2025 को इंडिया ने 2 पार्शियल क्लेम्स जो है वो सबमिट किए हैं ताकि जो है अलग अलग जो क्लेम इंडिया ने किए हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो अवॉइड किया है, ताकि उस पर्टिकुलर 100 नॉटिकल माइल्स के एरिया की वजह से जो है वो पूरा क्लेम जो है वो डिक्लाइन ना हो। तो इसको क्लेम को बनाने में NCPOR का बहुत बड़ा रोल है। तो बाकी की कंट्रीज़ के साथ भी कुछ ओवरलैप एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ओमान के साथ, लेकिन कोई डिस्प्यूट में नहीं है वो एरिया। इंडिया का जो क्लेम है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में, उसको म्यांमार और श्रीलंका लेकिन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शंस वहाँ पर दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FDI न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि फॉरेन फर्म्स को अलाउ किया जाए कि वो 49% ओनरशिप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज़ में ले सकें। तो इंडिया जो है एक मेजर शिफ्ट चाहता है अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी में, और 49% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अलाउ करवाना चाहता है, ताकि जो है इंडिया अपने टाइटली कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर सके। तो न्यूक्लियर एनर्जी अभी सिर्फ बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करती है, जबकि स्ट्रेटजिक रोल है उसका इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में। अभी वो सिर्फ 8 गीगावाट कंट्रीब्यूट करती है, जो कि सिर्फ 2% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्न होता है स्ट्रिक्टली बाय स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1960, लेकिन कंसर्न्स हैं ओवर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है ये परमिट करेगी फॉरेन कंपनीज़ को कि वो 49% इक्विटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है वो बढ़ा सके, और फॉरेन ओनरशिप जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो इस चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है 2 क्रिटिकल लेजिस्लेशंस। पहला तो है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो बिल्ड, ओन और ऑपरेट कर सके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड किया जाएगा। फिर जो सबसे कंटेंशियस प्रोविजन है हमारा सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उसको भी मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही हैं। तो बिसाइड्स फॉरेन फर्म्स, इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, और वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लगभग $26 बिलियन की जो है वो करना चाहती हैं इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में। इंडिया ने प्लेज किया है कि अपने कार्बन एमिशंस को वो रिड्यूस करेंगे और नेट जीरो एमिशंस पर पहुंचेंगे 2070 तक। उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का एम है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 8 गीगावाट से जो है वो एक्सपैंड किया जाए, जो अभी एक 8 गीगावाट है उसको एक्सपैंड करके 100 गीगावाट तक 2047 तक जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, जो कि एक 12 फोल्ड इंक्रीज़ होगा। इससे जो है डीपर एनर्जी पार्टनरशिप्स हो सकेंगी US, फ्रांस और रशिया जैसी कंट्रीज़ के साथ। तो अभी जो है वो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, लेकिन उसकी वजह से जो क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। लेकिन आएंगी भी, जब 49% अलाउ भी किया जाएगा तो भी वो केस बाय केस गवर्नमेंट अप्रूवल पर ही बेस्ड होंगी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में है उसको देखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स अनाउंस किए थे। तो CCS क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये, जैसे डिफेंस पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जो अपॉइंटमेंट करती है ऑफिशियल्स की इन द नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज़। तो एक कमेटी जो कंपेरेबल है करंट CCS को, वो पहले फॉर्म की गई थी 1947 में, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नेहरू द्वारा। तो पहली इमरजेंसी मीटिंग जो है उस कमेटी की हुई थी ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर, और उसको भी जो है प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो है उन्होंने चेयर किया था, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एज मेंबर्स के साथ। लेकिन जब कारगिल वॉर हुई उसके बाद ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बना दी गई और ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, फिर इसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, EAM सब मेंबर्स होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसके सेक्रेटरी लेवल कोऑर्डिनेटर होते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द CCS। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सर्वम AI। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप सर्वम को कंट्री का पहला इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए। तो बेंगलुरु बेस्ड जो सर्वम AI है ये कंट्री का फर्स्ट होम ग्रोन सोवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएगा। और गवर्नमेंट का जो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा इंडिया AI मिशन है, जिसमें रॉबस्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप करना है, डिप्लॉय करना और ऑप्टिमाइज़ करना विद इन इंडिया, उसके लिए ये हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ने सर्वम को ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लिया है, एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस था जिसमें 67 एप्लीकेंट्स थे। उसके बाद ही स्टार्टअप को जो है वो सिलेक्ट किया गया है और इसको एक्सटेंसिव सपोर्ट दिया जाएगा, GPUs इसको प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरा का पूरा जो ये मॉडल है ये लोकल टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बिल्ड किया जाएगा और लगभग 70 बिलियन पैरामीटर्स होंगे इसमें। तो अकॉर्डिंग टू सर्वम, LLM जो है वो फोकस करेगा एडवांस्ड रीजनिंग, वॉइस बेस्ड टास्क और फ्लुएंसी इन इंडियन लैंग्वेजेस पर। सर्वम AI का प्लान होगा कि 3 वेरिएंट्स बनाएं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के। सर्वम लार्ज मतलब एडवांस रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स जनरेशन टास्क के लिए। सर्वम स्मॉल एक लाइट वेट मॉडल जो कि ऑप्टिमाइज होगा रियल टाइम इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए। सर्वम एज जो कि कॉम्पैक्ट मॉडल होगा ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए। तो ये वेरिएंट्स जो हैं ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को केटर करेंगे। ये इनिशिएटिव जो है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज़्यादा आगे बढ़कर एक स्ट्रेटजिक मूव है एस्टैब्लिश करने के लिए क्रिटिकल नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी एम्फेसाइज कर रही है कि गोल है इसका मल्टी मॉडल मल्टी स्केल फाउंडेशन मॉडल्स बनाने हो। और सिटीजन्स के लिए मतलब क्या होगा इसका कि AI सिस्टम जो कि फेमिलियर और उनको कल्चरली रेलिवेंट लगेंगे, और एंटरप्राइजेस जो है वो इसकी AI कैपेबिलिटीज़ को हार्नेस कर सकेंगे कमर्शियल रीजंस के लिए। तो इंडिया AI मिशन हमको पता है कि इंडिया के AI इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। तो इसके अंदर एक इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी प्रोग्राम भी है जिसमें कि 10,000 GPUs को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा डेमोक्रेटाइज करने के लिए एक्सेस टू AI रिसोर्सेज। तो सर्वम की सिलेक्शन जो है फर्स्ट AI सर्व सोवरन AI मॉडल बनाने के लिए जो है वो की गई है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें तो इस सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ वास्ट डेटा सेट्स जो है वो करने पड़ेंगे अगर आपको ये LLM बनाना है। सर्वम का मॉडल जो है वो क्लोजली मैनेज्ड और फाइन ट्यून्ड होगा स्पेसिफिकली फॉर इंडियन यूज़ केसेस, और एक सिक्योर और स्पेशलाइज्ड ऑल्टरनेटिव देना जहाँ पर डेटा प्रिवेसी और लोकलाइज सॉल्यूशंस हमें बैलेंस करने हैं, वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर वॉलेट किया है लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया में कश्मीर वैली में। LOC क्या है? डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में। कोई इंटरनेशनल बाउंड्री एक्चुअल में नहीं है ये, बट एक सीज़ फायर लाइन है लगभग 740 किलोमीटर की, हैविली मिलिटराइज्ड है ये। पार्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इंडिया के साइड से, और पाकिस्तानी साइड से POK गिलगिट और बाल्टिस्तान का पार्ट है। LOC जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से डिफरेंट है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको तो इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN हाई सीज ट्रीटी, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल बाद जब ये हाई सीज ट्रीटी साइन की गई है, डेलीगेट्स गैदर हो रहे हैं फर्स्ट सेशन के लिए प्रेपरेटरी कमीशन के इस हाई सीज ट्रीटी के, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, पहली ऐसी ट्रीटी है जो वर्ल्ड के ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है UN क्लॉज के अंडर, और इसको हम पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में। ट्रीटी जो है वो 120 दिन बाद इन्फोर्स होगी जब 60th कंट्री इसको रेटिफाई कर देगी।
तो इसमें 75 आर्टिकल्स हैं जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मरीन इन्वायरमेंट करना चाहते हैं। 30% ऑफ द सीज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डालना 2030 तक इसका एम है। एक लीगल फ्रेमवर्क देता है ये वास्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए, इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स करना ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ से क्या डैमेज हो रहा है डीप सी माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ से, ये इसका एक फंक्शन है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी इस्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है। तो हाई सीज़ क्या है, वो एरियाज़ जो किसी की भी टेरिटोरियल वाटर्स में या किसी भी जो है क्लेम में नहीं आते हैं, और ये बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज़ की जो आपके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ से शुरू होते हैं ये एरियाज़। तो सीज़ जो किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं उनको हम हाई सीज़ कहते हैं। लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड ओशंस जो है वो बाय सरफेस एरिया वो हाई सीज़ ही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बॉम्ब। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस के फाइटर जेट्स जो हैं वो स्टॉर्म ब्रेकर प्रिसीजन ग्लाइड बॉम्ब्स का यूज़ कर रहे हैं अपने कॉम्बैट में अगेंस्ट हुथीज़। तो स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बॉम्ब एक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है जो अमेरिकन एयर लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है डेवलप्ड बाय रेथियन। ये ऑल वेदर प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने के लिए केपेबल है, चाहे वो स्टेशनरी या मूविंग टारगेट्स हों। इसमें मल्टी मॉडल गाइडेंस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। जीपीएस और आईएनएस नेविगेशन सिस्टम जो है इसको अलाउ करते हैं रियल टाइम इन फ्लाइट टारगेट अपडेट्स के लिए। तो इसमें एक टैकनेट डेटा लिंक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ताकि वेपन टू वेपन कोलैबोरेशन हो सके। ये सिस्टम ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन को यूज़ करता है ताकि आइडेंटिफाई और एंगेज किया जा सके व्हील्ड व्हीकल्स को भी। और मल्टी इफेक्ट वॉरहेड्स जो है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि इसकी लीथैलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन। टॉपिक सिक्योरिटी साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने एक ग्राउंड टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन का लगभग 1000 सेकेंड्स के लिए हैदराबाद में। स्क्रैमजेट क्या होता है? सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट, जो कि एक एयर ब्रीदिंग इंजन होता है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स में ऑपरेट करने के लिए एफिशिएंट होता है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन्स ये रोटेटिंग कंप्रेसर्स का यूज़ नहीं करता है। इंस्टेड व्हीकल की जो हाई स्पीड होती है वो कंप्रेस कर देती है एयर को। तो स्क्रैमजेट्स जो है वो सुपरसोनिक कंबस्शन इनेबल करता है और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए भी जो है ऑफ कोर्स सूटेबल होता है। तो इसमें कैसे कैसे काम करता है? एयर इनटेक जो होता है वो उसके लिए ये सुपरसोनिक स्पीड्स ये अचीव करता है। फिर जो है हाई स्पीड मूवमेंट की वजह से जो है कंप्रेस होती है इनकमिंग एयर। कंबस्शन कैसे होती है? हाइड्रोजन का फ्यूल जो इसमें इंजेक्ट किया जाता है वो इग्नाइट किया जाता है और फिर एयर जो है वो सुपरसोनिक होती है और एयर सुपरसोनिक रहती है। और स्क्रैम जेट्स जो है उनको रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ की ज़रूरत होती है क्योंकि वो इतनी जो है थ्रस्ट जो ज़ीरो स्पीड पर अचीव नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन दिया गया है जेट इंजन, रैम जेट और स्क्रैम जेट में, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल वो हैं जो आपके मैक 5 की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और हाई स्पीड और मैन्योवरेबिलिटी दोनों ऑफर करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होते हैं, एक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनीमिया। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी कंडक्ट की गई है विमेन पर यूके में, जिसमें बताया गया कि अगर जो है विमेन अनीमिक हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो 47% हायर चांस है कि चाइल्ड को एक हार्ट कंडीशन होगी बाय एट बर्थ, ठीक है। अनीमिया एक प्रॉब्लम है कि जब बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक प्रोटीन होता है जो रेड सेल्स में होता है और उसकी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी लेकर जाता है। अगर अनीमिया है तो उससे टायर्डनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी। कुछ टाइप्स ऑफ अनीमिया तो इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन लोगों को जो है लोग इसको एक्वायर भी कर लेते हैं इस कंडीशन को ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम्स। WHO एस्टिमेट करता है कि 40% चिल्ड्रन, 37% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 30% ऑफ वुमेन जो है वो अनीमिक है। अनीमिया जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। सिवियर अनीमिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। एक कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है जो जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। मतलब जब आपकी बॉडी अच्छे से आयरन अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, आप कंज्यूम ही कम कर रहे हो आयरन को, तो उससे जो है ये अनीमिया हो जाता है। ट्रीटमेंट्स जो है इसमें ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं और एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि कई फॉर्म्स ऑफ अनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is continental shelf claim. This topic is important for your international relations. So India has expanded the extended continental shelf claim by nearly 10,000 square kilometers in the Central Arabian Sea, and it has also modified its earlier claims to avoid a long-standing maritime boundary dispute with Pakistan. So revised submissions were made in April 2025 at the UN Commission on the Limits of the continental shelf, and coastal countries have exclusive rights to mining, fishing, and resources up to 200 nautical miles from their baselines. So countries can claim additional seabed areas if they can scientifically prove if it is a natural extension of their landmass to the continental shelf. Uh, Rights which are given by this claim include commercial mining of polymetallic nodules, oil reserves, and other valuable minerals. So, what are the claims of Indian in the ocean? First is of course 12 nautical miles, which is our territorial sea. Then we have 200 nautical miles, which is our exclusive economic zone. Then we have made a new extension. 1.2 million square kilometer of ECSB is being added to the existing 2 million square kilometer of exclusive economic zone. So if it gets approved, then it would become almost equal to India's land area of 3.274 million square kilometer. So India made the first submission to CLCS in 2009, and in 2021, Pakistan objected to India's claims, citing an overlap of 100 nautical mile area near the disputed Sur Creek region. So that's why CLCS rejected India's full claim in the Arabian Sea in March 2023. But now, in the first week of April, we have submitted two partial claims to safeguard uncontested regions. Okay, so we do not want to imperil the entire claim, so that's why we have made two partial claims. So this approach would avoid weakening India's position in the Central Arabian Sea region. So NCPOR has played a key role in technical aspects of determining India's continental shelf. We have overlapping areas with other countries as well, like with Oman we have overlap which exists, but it is not under dispute due to a 2010 agreement. But with Myanmar and Sri Lanka we have some overlapping disputes in Bay of Bengal and Indian Ocean. Okay, so the next topic is FDI in nuclear power plants. This topic is important for economy section. Indian government is contemplating foreign firms participation at the level of 49% ownership in nuclear power facilities. So India is preparing for this major shift in its energy strategy. This would mark the first time India would open its tightly controlled nuclear energy sector to substantial foreign participation. And nuclear energy plays a relatively small but strategic role in India's electricity mix, currently contributing just over 8 gigawatt, roughly 2% of the installed capacity. India's nuclear energy infrastructure is governed strictly by state-owned entities under the Atomic Energy Act of 1960. However, concerns over the Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010 exists. So the proposed policy will permit foreign companies to own up to 49% equity in nuclear power plants. This foreign ownership would not be automatic. It would require prior government approval to ensure stringent scrutiny. To facilitate this change, the government plans to amend two critical legislations. First is the Atomic Energy Act, which would allow private sector companies to build, own, and operate nuclear plants and engage in atomic fuel mining and manufacturing. Then we have this Civil Liability for Nuclear Damage Act, which would be modified because it has been a major deterrent for foreign and private investors. So besides foreign firms, Indian private companies are also showing interest. They are discussing potential investments amounting to about $26 billion in the nuclear sector. India's pledge to reduce carbon emissions and achieve net zero emissions by 2070 relies heavily on expanding its clean energy portfolio. For that, nuclear energy is very important. So government is claiming that it wants to expand its nuclear energy capacity from around 8 gigawatt today to about 100 gigawatt by 2047, which would be a 12-fold increase. This move could also facilitate deeper energy partnerships with countries like US, France, and Russia. So foreign investments would not be automatic. They would require case-by-case government approval, and the core principles of nuclear non-proliferation and safety will remain uncompromised.
So the next topic is Cabinet Committee on Security. This topic is important for your polity section. So noting the cross-border linkages of the terrorist attack in Pahalgam recently, Cabinet Committee on Security has announced a series of extraordinary retaliatory measures against Pakistan. So what is CCS? It is headed by the Prime Minister. It is responsible for important discussions and decisions on defense policy, expenditure and matters related to national security. It is also the apex body when it comes to the appointments of officials in the national security bodies. So a committee which is comparable to this current CCS structure was first formed in independent India in 1947 by the then Prime Minister Nehru. The first emergency meeting of this committee was called during the Indo-Pak War of 1947-48. It was chaired by Prime Minister, the Home Minister and Defence Minister, but only after the Kargil War conflict but only after the Kargil War in 1999, this committee evolved into the present model of CCS, and this CCS has evolved into the apex decision-making body of India. Okay, so Prime Minister serves as its chairperson, and it also comprises of Home Minister, Defence Minister, Finance Minister, and External Affairs Minister. The NSA acts as a secretary-level coordinator, and Cabinet Secretary is responsible for maintaining records of all the meetings and proceedings of the CCS. So the next topic is Sarvam AI. This topic is important for your science and tech section. So this is an important topic. Government has selected Bengaluru-based startup Sarvam to build the country's first indigenous artificial intelligence large language model. So this Bengaluru-based startup Sarvam AI has been selected to build the country's first homegrown sovereign LLM. This project, undertaken under the government's ambitious 10,000 crore India AI mission, aims to create a robust AI infrastructure fully developed, deployed and optimized within India. So government has chosen Sarvam after a rigorous selection process involving 67 applicants. This startup will receive extensive support. GPUs will be provided through companies to this startup, and this model will be built entirely using local talent and infrastructure, which will have 70 billion parameters. So according to Sarvam, LLM will focus on advanced reasoning, voice-based tasks, and fluency in Indian languages. And Sarvam AI plans to develop 3 key variants, like the Sarvam Large, Small, and Edge. The large one would be designed for advanced reasoning and complex generation tasks. The small one would be lightweight model for real-time interactive applications. The compact model would be tailored for on-device processing. So these variants would cater to a wide range of applications. This initiative goes beyond technological advancement because it is a strategic move to establish critical national AI infrastructure. The company has emphasized that the goal is to create a multi-model, multi-scale foundation models, which are not just functional but deeply which are not just functional but deeply deeply familiar. Okay, so this would mean that the AI systems which would feel familiar and culturally relevant for citizens, and it would also mean for the enterprises it would unlock the potential of unlock the potential of AI capabilities for commercial use. Okay, so it is part of the India AI mission, which is focused on scaling India's AI ecosystem. And one of the key initiatives under the India AI Compute Capacity Program, India AI mission is India AI Compute Capacity Program, which aims to deploy over 10,000 GPUs to democratize access to AI resources. Okay, so Sarvam selection has been made to develop the first sovereign AI model. Okay, but what are the challenges and opportunities? So the challenge would be to have a secure, specialized alternative in an era where data privacy and localized solutions are paramount. Okay. So the next topic is line of control. This topic is important for your international relations. So Pakistan has violated the ceasefire along the line of control in the Kashmir Valley. LOC is the de facto military boundary between India and Pakistan in the region of Jammu Kashmir. It is not an international boundary, but a ceasefire line which was established after the 1947-48 India-Pakistan war over Kashmir. So LOC stretches about 740 kilometers from the region of Ladakh in the north down to the Poonch district in the south. It is heavily militarized. And on the Indian side of LOC comes a part of Jammu Kashmir and Ladakh. On the Pakistani side comes the part of POK, Gilgit and Baltistan. This LOC is different from the international border, which is officially recognized border between India and Pakistan elsewhere.
So the next topic is UN High Seas Treaty. This topic is important for your international relations and environment section. 2 years after countries adopted the High Seas Treaty, delegates recently gathered at the first session of the Preparatory Commission meeting in New York to develop rules needed for the implementation of the and of this agreement, and also to set the stage for first conference of parties. So what is this High Seas Treaty? It is an international treaty under the UN clause. It is the first ever treaty to protect the world's oceans. It is also known as the Paris Agreement for the Ocean. It is a legally binding treaty to protect marine life in international waters, and this treaty will enter into force 120 days after the 60th country formally ratifies this agreement. So it contains 75 articles which aim to protect, care, and ensure the responsible use of the marine environment. This treaty aims to place 30% of the seas into protected areas by 2030. It will also provide a legal framework for establishing vast marine protected areas. It also covers environmental assessments to evaluate the potential damage of commercial activities. It will also establish a conference of parties which will meet periodically and enable member states to be held to account on issues like governance and biodiversity. Parties cannot claim or exercise sovereign rights over marine resources. It helps to minimize impacts on the marine environment through area-based management tools. So what are the high seas? The high seas begin at the border of countries' exclusive economic zones. Beyond that point, seas are under the jurisdiction of no country. They make up more than 60% of the world's oceans by surface area. Okay. So the next topic is Stormbreaker glide bomb. This topic is important for your security section. So US fighter jets appear to be using advanced Stormbreaker precision glide bombs in combat against the Houthis. Stormbreaker is known as the small diameter bomb. It is an American air-launched precision-guided glide bomb developed by Raytheon. It is designed for all-weather precision strikes against both stationary and moving targets. It features a multi-mode guidance system which combines millimeter wave radar, uncooled infrared imaging, and a digital semi-active laser. So it's a GPS INS navigation system which allows for real-time in-flight target updates. It incorporates TACnet data link technology which enables weapon-to-weapon collaboration. The system facilitates automatic target recognition to identify and engage tracked or wheeled vehicles. It also features a multi-effects warhead which enhances lethality against a range of targets. So the next topic is scramjet engine. This topic is important for your security section. Recently, DRDO has successfully conducted a ground test for a scramjet engine for about 1000 seconds at Hyderabad. A scramjet is an air-breathing engine which is designed to operate efficiently at hypersonic speeds, that is Mach 5 and beyond. It does not use any rotating compressors. It instead relies on vehicles high speed to compress air. Scramjets enable supersonic combustion, making them suitable for hypersonic cruise missiles. Scramjet engine works through the principle that vehicle must be ready for flying at supersonic speeds. Then the high speed movement compresses the incoming air. Hydrogen fuel is injected and ignited while the air remains supersonic. Scramjets need rocket assisted takeoff as they cannot generate thrust at zero speed. Okay. So this comparison here is between jet engine versus ramjet versus scramjet. What are the hypersonic missiles? So hypersonic missiles travel at speed greater than Mach 5. They offer high speed and maneuverability. There are two types of hypersonic weapon systems. First is the glide vehicles, and then there is cruise missiles. So next topic is anemia. This topic is important for your social issues. According to a recent study conducted on women in the UK, being anemic during pregnancy could be linked to a 47% higher chance of child having a heart condition at birth. Anemia is a problem of not having enough healthy red blood cells or hemoglobin to carry oxygen to the body's tissues. So hemoglobin, we know, it's a protein found in red cells, and that carries oxygen from the lungs to all other organs in the body. Having anemia causes tiredness, weakness, and shortness of breath. Some types of anemia are inherited, but people may also acquire or develop the condition during their lifetimes. WHO estimates that 40% children, 37% of pregnant women, 30% of the women of 15 to 49 years of age worldwide are anemic. Anemia can be short-term or long-term. It can be mild to severe. Severe anemia can be life-threatening as well. A common type of anemia is iron deficiency anemia, in which you're not taking or enough iron, or body is not absorbing enough iron. So treatment of anemia might involve taking supplements or having medical procedures. Eating a healthy diet might prevent some forms of anemia. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.